ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिधिभर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गदाभूत् अङ्गीर्पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तम् दृष्ट्वा ब्रुवः किल सुनीतिसुधोतिरोक्षिन् आजिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गदोऽभिजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्दरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षा सन्दृष्टनारद निवेदितमन्त्रमार्गस्वामारराध तपसा मधुकाननान्दे ताते विषण्णहृदयेन गरीगतेन श्रीनारदेन परिसान्द्रितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तभो बलदिरुच्छ्वसिते दिगन्धे देवार्तितस्त्वमुदयः करुणार्द्रचेता त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमदे पुरस्तात् आविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढा त्वद्दर्शनप्रमथभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि धरेण तथा धरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्दनेन मा भाषदास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूय सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवर्तिहीनम् इत्यूचुषि त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेत रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामस्ताते गदे च वनमागृधराज्यभार यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदाभुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्धे भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वादालयाधिपनिरुन्धि ममामयौखान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।